Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we have started unit number 2, chapter number 2, that is ecosystem, and today I will deliver its 4th lecture, and it is about the abiotic factors of an ecosystem like air, temperature, soil, water, air, etc. So my dear students, today all the students will be able to explain the biotic factors like light, temperature, soil, water, and we will discuss about their linkage in the next lecture. So my dear students, हमने एक ecosystem के जो living components हैं, जो biotic factors जिनको कहा जाता है, वो हम already जो है discuss कर चुके हैं in the previous lecture. Today we will discuss about the abiotic factors, the non-living factors of an ecosystem. कैसे जो है एक ecosystem को बनाने के लिए non-living things जो है वो भी बहुत important है. क्यों important है, कैसे important है, we will discuss it in the lecture. So my dear students, let's quickly recap. Quickly tell me, observe and find out biotic components of ecosystem from the given picture. Now you can see a picture on your screen. Pause the video, carefully look at the picture and find out all the biotic factors in here. Very good. I hope you have done it. Biotic factors, the plants, the grass. These are all the biotic factors of the ecosystem that you can see on your screen. So that means all the living things are the biotic factors. Now my dear students, which factors supports biotic factors to survive in the given scenarios? तो अब आपको मैं different pictures दिखाऊंगी और आप मुझे बताएंगे कि यहाँ survive करने के लिए कौन कौन से factors जो हैं वो important हैं जो कि animals को help करते हैं या यहाँ के inhabitants जो हैं या यहाँ के जो biotic factors हैं उनको help करते हैं survive करने में. So my dear students, जैसे कि यहाँ पे camel run करता है, so camel जो है वो कैसे यहाँ पर survive करता है? It can easily run on the sand. It can store its food. So that's how it can survive the extreme desert of the extreme temperature and conditions of this desert. Here you can see different, यहाँ पे आपको grass नजर आ रही है. It's a grassland. So यहाँ पे पानी, बारिश और प्लांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं. सो यहाँ पर मीट ईटिंग एनिमल्स एंड प्लांट ईटिंग एनिमल्स यानी कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ ज़िंदा रहने के लिए पौधे भी मिल रहे हैं. जब पौधे होंगे तो जानवर होंगे प्लांट ईटिंग, और उन जानवरों को खाने वाले कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी होंगे. एंड देन देयर इज़ वाटर, तो पौधे भी बहुत ज़्यादा हैं और बारिश की वजह से, सॉइल की वजह से जो है वो ऑल द बायोटिक फैक्टर्स कैन सर्वाइव इन दिस scenario. So here is snow, extreme snow. So कुछ animals ऐसे होते हैं जैसे कि penguin and polar bears which can survive in this extreme condition. So how do they survive in this extreme condition? So because they have fur in here on them, so they can easily live in the ice in extreme conditions. Now let's look at the Islamic perspective. In the creation of the heavens and the earth and the alteration of night and day and the ships that run in the sea with that which benefits mankind and the water that Allah sends down from the sky, then gives life with it to the earth after its death and spreads in it all kinds of animals and the changing of the winds and the clouds made subservient between heaven and earth. There are surely signs for people who understand. So my dear students, आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि कैसे एनिमल्स के दरमियान यानी कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं उनके दरमियान एक कनेक्शन है. अल्लाह ताला पानी उतारते हैं, हवा चलाते हैं, मिट्टी है इसके बाद जिनमें से पौधे निकलते हैं. तो ये तमाम जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इन्हीं की वजह से लिविंग थिंग्स जो हैं दे कैन सर्वाइव. यानी कि दोनों बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, व्हेन इंटरैक्ट दे मेक अप एन इकोसिस्टम.
So my dear students, lesson for today is components of ecosystem. We will discuss about the biotic factors. यानी कि जितने भी लिविंग फैक्टर्स हैं एक इकोसिस्टम के, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. बायोटिक फैक्टर, हम एबायोटिक ऑलरेडी बायोटिक फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम एबायोटिक को डिस्कस करेंगे. एबायोटिक फैक्टर मींस नॉन लिविंग थिंग्स. और कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स एक इकोसिस्टम में होती हैं? सनलाइट, एयर, soil, temperature and water. These are all the non-living factors of an ecosystem which are extremely important for the survival of biotic factor. अब आपको मेरे बायोटिक और एबायोटिक कहने से समझ आ जाएगा कि बायो मीन्स, बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक मीन्स द नॉन लिविंग थिंग्स. सनलाइट, एयर, soil, temperature, water, these are all the abiotic factors of an ecosystem. So my dear students, sunlight promotes plant growth. In the presence of sunlight photosynthesis होता है और photosynthesis की वजह से जो है plants can make their own food. So sunlight is extremely important for the producers that are plants. So my dear students, today we will discuss about the abiotic factors. Quickly open page number 28 in your science 4 books. I hope everybody has opened the books. Now we will start the reading. Quickly put your fingers where I will read. Abiotic factors. Abiotic factors are non-living things and influences the living world. Abiotic factors include sunlight, air, soil, temperature and water. Sunlight. Sunlight promotes plants' growth. Most of the ecosystems receive a maximum of sunlight. However, in the marine ecosystem, sunlight can reach up to a certain depth, due to which photosynthetic activity, behavior and response of organism change accordingly. Many plants and animals live in the upper 100 feet region due to the availability of light, such as whales, dolphins, and sharks. Below this region, the environment is cold and dark. The animals in dark region develop unique adaptations to overcome the challenges found here. So my dear students, चाहे हम लैंड की बात करें, चाहे हम वाटर इकोसिस्टम की बात करें, हर जगह पर सनलाइट की बहुत ज़्यादा अहमियत है. सनलाइट इवन पेनिट्रेट्स इन द वाटर. आपको पता है ज़मीन पर तो पौधे जो हैं वो उनको हर जगह पे सनलाइट इजीली अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से दे कैन सिंपली प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, जिसकी वजह से जितनी भी कंज्यूमर्स हैं दे सर्वाइव. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इवन इन वाटर एक सर्टन डेप्थ तक सनलाइट अंदर जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स अंडरनीथ वाटर होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है. इसी वजह से शार्क्स और वेल्स टाइप जो एनिमल्स हैं दे लिव इन 100 फीट ऑफ द वाटर, यानी कि अपर 100 फीट ऑफ द वाटर. और इससे नीचे जो है वो डार्क रीजन होता है, कोल्ड रीजन होता है. और जो एनिमल्स इस डार्क और कोल्ड रीजन में रहते हैं उनके अंदर यूनिक एडेप्टेशंस है, जिसकी वजह से वो इस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं. सो देन कम्स एयर. अब हमने पढ़ लिया कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स का फूड बनाने के, लेकिन अगर सिर्फ सनलाइट हो और एयर ना हो तो प्लांट्स फिर भी अपना फूड नहीं बना सकेंगे. सो प्लांट्स ऑल्सो नीड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. इट इज अ गैस, सो दे नीड दिस गैस टू मेक देयर ओन फूड. सो एयर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द plants to make their food. Air provides oxygen to animals, air provides carbon dioxide to plants, air helps to disperse the seeds. Even जो plants के seeds हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हवा की वजह से भी move करते हैं. So now we will read about the air. Page number 28, same pages. Air provides life gases, that is oxygen to animals and carbon dioxide to plants. Its quality, clean or polluted, and condition, warm or cold, affect and select the variety of life. Wind helps plants in pollinating through seed dispersal.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, हवा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ गैसेस प्रोवाइड करती है एनिमल्स को या कंज्यूमर्स को, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, वेयर एज टू द प्लांट्स इट प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड। हवा की कैसी कंडीशन है, ये पोल्यूटेड है या साफ है या गर्म है या ठंडी है, इसकी वजह से इकोसिस्टम के अंदर जो है वो जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं। इसके अलावा हवा जो है इसकी वजह से सीड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स भी करते हैं, यानी कि उड़ के एक जगह से दूसरी जगह गिर जाते हैं। सो ये सीड डिस्पर्सल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स सॉइल, मिट्टी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हवा हो और सनलाइट हो लेकिन मिट्टी ना हो तो स्टिल प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे। तो हर चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं ये इकोसिस्टम बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। सो सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स को चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, वो उसको मिट्टी से मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, magnesium, sulfur. These are all very important nutrients which are present in the soil for the growth of plants. और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि मिट्टी के नीचे रहते हैं, बहुत सारे वर्म्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं which make burrows and live inside the soil. So soil, plants और animals दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लूमी सॉइल एंड देन क्लेई सॉइल, दो तरह की मिट्टी है। इसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी सॉइल अवेलेबल है। लूमी सॉइल जो है ये बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल है फॉर द प्लांट ग्रोथ, क्योंकि इसके अंदर तमाम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, इंपॉर्टेंट यानी कि जितना पानी होना चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए पानी की टू होल्ड इन द सॉइल, दैट इज देयर। सो लूमी सॉइल इज द बेस्ट टाइप ऑफ द सॉइल फॉर द प्लांट ग्रोथ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स. Now we will read about the soil given on page number 28 and 29. Soil. Soil provides nutrients, nesting and hiding places to organisms. The specific role of soil in an ecosystem changes with its type. Generally, ecosystem with loomy and clay soils have a great variety of plants and animals. The reason is an increase in decomposition activity in such soils. In ecosystem where the soil is sandy, there are few decomposers due to which plants do not find proper nutrients and support to get them anchored into the soil. Resultantly, there is minimum variety of animals and plants in such ecosystem. So my dear students, there are different types of soil like clay, sandy, chalky, loomy and silty. So my dear students, जो best type of soil है plants की growth के लिए, that is loomy and then clay. इन soils के अंदर decomposers जो हैं वो बहुत अच्छे से survive करते हैं, तो इस वजह से वो प्लांट्स और एनिमल्स को इजीली डिकम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से दे कैन ग्रो प्रॉपरली। सैंडी सॉइल के अंदर डिकम्पोजर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्यू animals or plants जो हैं they can survive there. So the best type of soil for the growth of plants is loomy and clay soil. Temperature: cold temperature, hot temperature, moderate temperature. So different types of temperature in different ecosystems, और ये जो है वो मुख्तलिफ variety of plants और animals जो हैं उनके survival को support करते हैं. Now we will read about the temperature given on page number 29. An ecosystem with moderate temperature flourishes the most. It makes the climate ideal for life. On the contrary, extreme temperatures reduce the number and variety of life forms, such as deserts, extreme hot temperature, and polar regions, extreme cold temperatures. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, वहां पर सबसे ज्यादा जो है आपको बायोटिक फैक्टर्स नजर आते हैं, यानी कि लाइफ जो है सबसे ज्यादा आपको मॉडरेट टेम्परेचर में नजर आएगी। वेयर एज द एक्सट्रीम्स हॉट और कोल्ड, आपको यहाँ पे कम प्लांट्स या एनिमल्स या कम बायोटिक फैक्टर्स जो है वो नजर आएंगे, बिकॉज नॉट ऑल द प्लांट्स कैन सर्वाइव द हॉट or the extreme cold temperature. So the moderate temperature is the best for the survival of biotic factors. So temperature is also very important. So my dear students, now and very important abiotic factor, water.
Water helps in good health and growth of animals and plants respectively. तमाम जानवरों और पौधों को पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए. अगर पानी नहीं होगा तो पौधे और जानवर दोनों जिंदा नहीं रह सकते. So plants need water to make their food, whereas animals also need water to survive. Now we will read about water. The presence of water in an ecosystem makes it biologically diverse. Animals enjoy good health while plants grow tall. तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक इकोसिस्टम में अगर पानी प्रेजेंट है तो वहां पे इकोसिस्टम जो है वो बहुत डाइवर्स हो जाता है. यू कैन फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम विद इन दैट इकोसिस्टम. तो पानी की मौजूदगी जो है वो लाइफ को या बायोटिक फैक्टर्स को सपोर्ट करती है. अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड वाटर. Mesopotamia developed at the Euphrates River. Egyptians developed at the Nile River. Indus Valley civilization developed at Indus River. So my dear students, पुराने ज़माने में जो जितनी भी लोग थे वो आबादकारियाँ जो हैं अपनी या जो अपनी सिविलाइजेशन है उसको कहाँ पर प्रमोट करते थे? यूजली फ्रेश वाटर बॉडीज के पास, दरियाओं के पास, ताकि उनको ईजिली पानी जो है वो अवेलेबल हो. जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ सिविलाइजेशंस हैं जो ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं, उनके नाम नजर आ रहे हैं. दीज ओल्ड सिविलाइजेशन वर ऑल प्रेजेंट नियर वाटर बॉडीज. तो पानी जो है वो सपोर्ट करता है बायोटिक फैक्टर्स को यानी कि लाइफ को, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमने आज एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े हैं, सनलाइट helps in photosynthesis, water helps plant grow tall and nourish animals, soil provides nesting sites and nutrients, temperature moderates the climate, whereas air provides life gases. So these are all the abiotic factors present in ecosystem which supports biotic factors. So linkage of biotic factors with abiotic factors. Here you can see कि अगर पौधे जो है वो कैसे जिंदा रहेंगे? They need sunlight, air, water, soil to survive. अगर इनमें से कोई एक भी फैक्टर मिसिंग होगा तो there will be no plants. So if there will be no plants, there will be no consumers. So all the biotic factors are depending on the abiotic factors. If the abiotic factors will be missing, the biotic factors will definitely, they will die or they will end. So plants, animals and decomposers are the biotic factors, whereas sunlight, air, water, soil and temperature, these are the abiotic factors of the ecosystem. Here you can see an ecosystem. This is फॉरेस्ट इकोसिस्टम. यहाँ आपको तमाम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो इकट्ठे नजर आ रहे हैं एक ही पिक्चर में, ड्यू टू विच यू कैन से दैट कि तमाम जो एक इकोसिस्टम को बनाने के लिए बायोटिक यानी कि लाइफ एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर नेसेसरी, और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है दे मेक अप एन इकोसिस्टम. नाउ इज टाइम फॉर एन एक्टिविटी. Take a picture of a forest ecosystem and remove some biotic and abiotic factors. Distribute class into groups and instruct them to discuss impacts of deleting the components from the ecosystem. After done, one group member will present the finding in the class. So my dear students, बड़ी ही interesting सी activity है. आपकी टीचर को क्या करना है कि आपको कुछ pictures जो हैं एक forest ecosystem की देनी है, और उनमें से for example one boy can represent as an air, the other girl can represent as water, one can represent as a plant. तो अगर इनमें से हम किसी एक को भी, one can represent as a sun. So आप बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों को बनाएं और उसके बाद किसी एक को जो है वो स्किप कर दें और उससे कहें कि अब आप यहाँ से जाएं या क्लास छोड़ दें. तो अब आप ये देखें कि कैसे जो है, क्या जो है अब इकोसिस्टम सर्वाइव कर सकता है. कोई एक जो है वो पार्ट मिसिंग होने से कैसे जो है पूरा इकोसिस्टम इफेक्ट होगा. डिस्कस अबाउट दैट एंड आफ्टर दैट प्रेजेंट इट इन योर ओन वर्ड्स. यू विल थॉरली एंजॉय दिस एक्टिविटी. Now is the time for practice. For practice, you will do this worksheet. This is attached in the description box below this video, or you can also get it in print form by your teacher. So my dear students, the illustration below shows a boy on a field trip. Explain the importance of soil on this ecosystem. Identify the abiotic factors present in the picture. So my dear students, अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है और एक लड़का जो है वो फील्ड ट्रिप पे गया है और वो देख रहा है कि कैसे मिट्टी और पौधों को वो सर्च आउट कर रहा है.
तो यहाँ पे सॉइल की इंपॉर्टेंस आपको लिखनी है कि एक पौधे के लिए सॉइल की, या उसको मुख्तलिफ एनिमल्स भी वहां पे नजर आएंगे, सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा एबायोटिक फैक्टर्स जो है आपको जितने पिक्चर्स के अंदर यू कैन पॉसिबली लुक आउट, राइट देम हेयर। Complete this worksheet and submit it to your teacher. I hope all of you have finished it, submitted to your teacher. Now is time to note down your homework. For homework, you will do MCQ number 3, given on page number 37. After that, you will do question number 2 from section C. How do biotic components interact with abiotic components? आपस में कैसे interact करते हैं, कैसे जो है एक दूसरे को support करते हैं, you have to write that down. So my dear students, today what we have learned that abiotic factors are air, water, soil and temperature, light. Sunlight helps in making food for whole plant. Air provides life gases. Soil provides nesting sites and nutrients. Temperature moderates the climate, and water is basic necessity of life for both plants and animals. So my dear students, I hope you have enjoyed the lecture. Now you know about both biotic and abiotic factors. In the next lecture, we will discuss about their linkage, how they interact and what is the link between both the biotic and abiotic factors in an ecosystem. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.